Assalamu alaikum dear students, it's your English lecture and I'm your teacher Miss Maryam Nazir. In our previous lecture we have done reading of lesson number 1, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope that all of you have completed your translation passages number 3, 7 and 15 you will write on your neat notebooks with proper presentation. I hope all of you have done your previous assigned work. Today what will we do? We will do from lesson number 1, the last sermon of Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, part B of comprehension, which is answer the following questions. We will do it on notebooks. So let's start with question number 1. What they are asking, we have done reading of the whole lesson, and after completing it I hope that all of you have every idea about it, that what we learned from this lesson. So we will do question answers. Number 1 question is, which aspect of life does Islam cover? G students, let's start. Which aspect of human life does Islam cover? Beta, you will follow proper presentation, although I have not written it with proper presentation, but you will do it with proper presentation which I gave you, whatever ideas I gave you in my previous lecture. Okay, Islam covers all aspects of life. First what they are asking कि इस्लाम किन किन पहलुओं पे बात करता है, किन किन पहलुओं का अहाता करता है. इस्लाम कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इस्लाम तमाम पहलुओं का अहाता करता है. फुल स्टॉप. इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये सिर्फ एक मज़हब नहीं है, बट ऑल्सो अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. क्या मतलब है कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ और ज़ाब्ता हयात का? इसका मतलब है कि इट इज़ गिविंग यू एवरी गाइडलाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट. किसी भी पहलू से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसी में भी कोई मसला है, तो इस्लाम आपको हर तरह से हर मसले की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. Second question is, when and where was the last sermon delivered? जी, तो क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि कब और कहाँ आखिरी खुतबा दिया गया. The last sermon was delivered on 9th Zilhaj. Zilhaj का Z भी कैपिटल आएगा, H भी कैपिटल आएगा, फिर कोम आएगा, 10 AH in the plain of अराफात. कहाँ दिया गया था? 9 Zilhaj को 10 हिजरी को अराफात के मैदान में दिया गया था. कोम आएगा अराफात के बाद, नियर द हिल नेम जबले रहमत. किस मुकाम पे, किस पहाड़ी के मुकाम पर? जबले रहमत के. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश्ड? व्हाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश्ड? क्यों ख़त्म की गई थी ज़माने जाहिलियत के जो भी काम उस ज़माने में हो रहे थे? द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों के तमाम काम वर इनह्यूमन, वो गैर अखलाकी थे, या वो इंसानियत के बगैर थे, मतलब इंसानियत नहीं थी उनमें. सो दे वर एबॉलिश्ड. सो उनको क्या किया गया? ख़त्म किया गया. एबॉलिश्ड का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप. ठीक है, ख़त्म करना. टू इम्प्रूव द सोशल, ताकि क्या किया जाए? समाजी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके. मोरल, इखलाकी, पर्सनल, ज़ाती एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की इखलाकी, समाजी, सियासी और ज़ाती ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली? हमें औरतों को नरमी के साथ या हमदर्दी के साथ क्यों उनके साथ पेश आना चाहिए? We should treat women kindly because they are our helpers and are not in a position to manage their affairs themselves. हमें उनके साथ नरमी के साथ पेश आना चाहिए क्योंकि वो हमारी मददगार हैं. They are our helpers, हमारी मददगार हैं, and not in a position, और इस सूरत हाल में नहीं है, to manage their affairs, कि वो अपने मामलात खुद हैंडल कर सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सरमन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एनी टू, कोई भी दो आपने लास्ट सरमन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने बताने हैं. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लास्ट सरमन आर एज अंडर.
جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لاسٹ سرمن کے وہ نیچے دیے گئے ہیں. نمبر 1 کیا تھا؟ دی موسٹ آنرڈ، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے، امنگسٹ یو، تم میں سے. امنگسٹ کی اسپیلنگ دیکھ لیں، MAMONGST، یہ پراپر اس کے اسپیلنگز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے. دا موسٹ آنر امنگس یو از دی ون، تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے، ہو از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان کا بھائی ہے. سو اسٹوڈینٹس اب ہمارا 6واں کوشچن رہ گیا لاسٹ، وہ کرتے ہیں. یہ سب آپ پراپر نوٹ بکس پہ کائنڈلی لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، وتھ پراپر پریزنٹیشن. اوکے اسٹوڈینٹ، لیٹ اسٹارٹ. لاسٹ کوشچن، وائی از دا لاسٹ سرمن کالڈ دا یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس؟ اب آخری خطبہ کو یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ Let me explain you. As all the human rights have been mentioned in the last sermon. کیونکہ اس میں تمام ہیومن رائٹس، انسانوں کے تمام حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا ان میں انسانوں کے حقوق کی زیادہ تر بات کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ دا چارٹر آف ہیومن رائٹس، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چارٹر آف ہیومن رائٹس. Okay students, complete your question answers in your neat notebooks with proper presentation. I know it's a new thing for you to note down each and every work of you on your neat notebooks, but I hope that all of you will do your work quite efficiently and kindly complete your work, and after completing your work start learning it.